United States Environmental Protection Agency, proving the fact that copper has antimicrobial and antiviral properties. Now what happens to our life is this. Basically, we need a stamp of approval from foreign agencies to tell us that what we have been practicing since ages or since years is actually the right thing and all. Recently, the whole world's attention was diverted to a photograph wherein our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, was having meal with his mother. And what caught my attention, other than the mother and son bonhomie, was the fact that they were having their food in the copper utensils. And I checked it back with the photograph of 2001 also. 2019 also. During those days also, he was having food in those copper utensils. So what I would like to say is that when it has been almost proved that copper has got antimicrobial and antiviral properties, can we undertake a proposal of converting all railway touch surfaces, the handles, the doorknobs and everything, to something which is laden with copper, so that keeping in mind the safety of the passengers, we can undertake such measures. Number two is, like you have allocated 1,000 crore for redevelopment project in this budget. Whether we can consider anything in this redevelopment package so that we can develop copper to be used in a better way in railway coaches. माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही रिसर्च करके ये विषय उठाया सर, मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे ये प्रश्न आया मेरे सामने, मुझे खुद को जानकारी नहीं थी, तो माननीय सांसद जी को धन्यवाद कि इनके प्रश्न के कारण जानकारी बढ़ी। माननीय सांसद जी का ये निवेदन है कि कॉपर को यूज करने से जो माइक्रोबियल वायरसेस, उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे आयुष पद्धति में भी है, हमारी संस्कृति में भी है और आज साइंस ने इसको प्रूव किया है। रही बात रेलवे में इसका उपयोग की, माननीय सांसद जी का जो सुझाव है कि जितने भी हमारे टच सरफेसेस हैं, उन टच सरफेसेस में कॉपर का यूज किया जाए, इसका एक्सपेरिमेंट रेलवे ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 300 कोच में किया। जो हैंड रेल्स है, जो 2 कोचेस को कनेक्ट करने वाला वेस्टिब्यूल है, उस सब एरियाज में कॉपर का उपयोग अधिक किया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। केवल एक ही इसमें समस्या है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉपर एक बहुत महंगा पदार्थ है और जिस सरफेस पे लगाए वहां से घिस भी जाता है जल्दी, तो शायद मास ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग हो, खान पान में, बर्तन में, हर जगह इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। सप्लीमेंट्री, एक तो आजकल हम लोग ये सब देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस या वैसा भी ऑफिसेस में जो खाने वाला जो ड्रिंकिंग वेसल्स है, उसमें भी कॉपर यूज। मेरा सेकंड आपके मैं एक सेकंड सप्लीमेंटरी, नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी करना चाहता हूं मंत्री महोदय, छोटा सा। आप बोले। आई कम फ्रॉम बराक वैली, जो इज अ गेटवे ऑफ 4 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, फ्रॉम त्रिपुरा टू मिजोरम टू मेघालय एंड मणिपुर। तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है बदरपुर घाट है। वहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो असम के हैं और रेलवे की एंट्री पॉइंट है। वहां पे काफी बड़ा सा एक ट्रैफिक जैम होता है ऑलवेज ऑन अ डेली बेसिस, मॉर्निंग टू इवनिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम ऑफ योर ऑफिशियल्स to study that area, whether we can do a ROB there so that all these can be eased out. जरूर माननीय सांसद जी का सुझाव हम मान्य करें। वी कलानिधि। Sir, all the railway recruitment boards are putting up their cutoff marks on the website, which is a public domain, sir. ये विषय नहीं है, वो आगे आएगा। ये विषय नहीं है। Okay. The subject, no subject. Is next, there, sir. Next question. Okay. Just ask it because it is a very important question, sir. No. Next question. Prasun Banerjee, no? Yes, sir. This latest question. रेलवे का बात, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछो आप। सर, हम थोड़ा अच्छा चीज पूछते उससे, कुछ खराब नहीं, पूरा एकदम अच्छी बात। उन्होंने जो किए है उसको बधाई देने पहुंचे। वो रेल मिनिस्टर से बात पूछने चाहते हैं नहीं,
सर एक बात उसको धन्यवाद देना चाहिए। रेलवे जस्ट मिनट, रेलवे हम लोग को साथ इतना अच्छा किए। जो लोग का पास पेट रहते, पेट मीन्स कुत्ता रहते जो लोग का पास, वो ट्रेन में लेने के लिए आप लोग पूरा कर दिया। ये रिकॉर्ड हुआ आप लोग को, कभी कभी नहीं हुआ था। वो अपना पेट लेके आने सकते हैं, जाने भी सकते हैं, आराम से जाते। सब कोई दूसरा बोल रहा था, मैं बोले अच्छा लग रहा कि इंडियन रेलवे पहले किए और अच्छा से किए, सब कोई लेके आ रहा। सर और एक नंबर बोल रहा कि आप मेहरबानी करके सर, रेल में स्पोर्ट्समैन को सबसे ज्यादा नौकरी होते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सबको मेहरबानी करके आप वो चालू करें। बहुत स्पोर्ट्समैन आप लोग का साथ है, थोड़ा बहुत अच्छा से देखिए। थैंक यू सर, नमस्ते। Sir, question number 205. Sir, a statement is laid on the table of the House. Sir, there is a lot of concern and ambiguity regarding the K-Rail Silver Line project initiated by the Kerala government. Sir, is the central government of India aware about the environmental impact, economical impact, social impact of this particular project? Sir, the left government in Kerala has totally failed in gaining the confidence of the local populace regarding the K-Rail Silver Line project. Sir, after 2018, Kerala has become a flood-prone state. We have very well understood that. So, when you give an answer, it is clearly told that you have given a principal sanction, and the final project is not sanctioned. It will depend upon the techno-economic viability. Sir, in a state like Kerala, where it is thickly, densely populated, how can we mobilize these resources? What is the environmental impact of this particular project? How can we take this project forward, sir? Sir, the government of Kerala is hiding a lot of things. The detailed project report was released by constant interventions by many of the members of the Legislative Assembly. My colleague Sri Anwar Saadat MLA had to give a breach of privilege in the Kerala Legislative Assembly in order to get the detailed project report. So, sir, when you sanction this project, kindly understand the environmental impact, financial feasibility of this particular project, and then take a decision on this particular project. Manavar Adhyaksh ji, I'll reply in English. Sir, this is a very sensitive project, Silver Line project in Kerala. Yesterday, during the discussion on demand for grants also, Honorable MPs from Kerala had very emotional views about this project. And there were views from almost all sections of the opposition. Sir, this is a 530-kilometer project, which is about 88-kilometer viaduct and 36-kilometer tunnel. It's a standard gauge, so there is no interoperability. So that means a train which goes on the normal Indian Railway network cannot really use this network. The concerns about environmental issues are real concerns. They are genuine concerns. If the way the project is currently designed, if it is implemented in that way, we don't really understand what will be the impact of environmental situation on that in that state. That is the reality. As far as Indian Railways is concerned, we have very clearly said that the project's final sanction will depend upon the detailed techno-economic feasibility. We have to see whether technology is okay or not, whether the soil conditions, because I met Metro Man Mr. Sridharan, he explained that the existing tracks in Kerala are still sinking every year, which basically means that there are lots of issues on the technical side also. On financial feasibility, the cost which is estimated is definitely an underestimate, so we need to carefully look at all those things, and then only something can come out, sir. This is a very complex issue. I would like that this be handled in a very systematic manner, sir. Thank you, sir, for the clarity, sir. My supplementary question is, sir, when we want to build a drainage, aapka bhi shraddha isme chahiye, sir. When we want to build a drainage out of the track, which is not owned by the Indian Railways, we need to go to the Southern Railway Chief, we need to go to the Chennai office to get a sanction to build a drainage. So there is a lot of land which is going to be taken over
from the Indian Railways, as well as now the foundation, the stone is being laid across Kerala, and there has been huge resentment amongst the people. If the principal agreement sanction is not given, if the project is not sanctioned, then how can the state government go ahead with the stone laying functions? How the survey is done in such a manner where when there is a lot of local resentment? Is the government of India trying to intervene in such a situation in this particular matter? So, honourable member has asked the point which is exactly squarely related to the state government's conduct. I would not like to comment on that. As far as we are concerned, the process is very straightforward. The in-principle approval basically means that, okay, go ahead, start working on understanding what do you need to complete that project, right? Which basically means feasibility study, which basically means survey, which basically means preparing a detailed project report. Preparing a DPR doesn't mean that the land is given from railways to that project. That's very clear, and that is a stated position. There is nothing new about it. If the state government is going ahead with land acquisition, please take it up with the state government. Shri Beni Benan. I'm thanks to the Honourable Minister, because you can understand the feeling and emotions of the Kerala people there. But still, without any sanction, the Kerala government is trying to implement this scheme. So now, the most significant problem in Kerala faces today is whether we need Kerala state or we want this Kerala. That is the problem there, sir. The entire proposal is without considering any of the critical ecological and geographical stature, as you said, of Kerala, where the population density is very high and 44 rivers rises across the east-west. So these small state structures of Malabar coast like a line hardly 600 kilometers with width of about 30 to 120 kilometers. So actually, if this Kerala will implement, it divides the state, overlooking its geographical position and enhance the vulnerability of natural disasters such as floods and heavy landscapes which are often occurring. So don't give sanction to the Kerala. Other than one more supplementary question that regarding the E part of my question, that is increase the speed of existing trains, sir. Kerala, you see, from the revenue passenger income, Kerala may be the highest in the southern side, but the infrastructure of Kerala stretch is very poor. We don't have the full automatic system there. We don't have the double line there. So, because of the natural of the geographical features, there are so many curves there, sir. So you have to strengthen. The project has been discussed in threadbare. Sir, the project has been discussed in threadbare. The politics of Kerala are unique, and my friends on this side, so many times they support some of the colleagues on that side, and they also support. So I don't know what they are internally deciding between themselves. So Advocate A.M. Arif. Sir. No, sir. Yes. No, sir. Mr. I was keeping silent when they were speaking. But give me protection. I have a difference of opinion regarding. I have a difference of opinion and stands here for the difference of opinion, sir. In our election manifesto, I am standing here for our view of the CPIM. In our may permit. Please permit. No, please. Please no. permit me. No. Give me protection. Honorable Give member. me protection. No. When they were speaking, I was silent. When they were speaking, I was silent. Please बैठ जाइए. Permit me. ये तरीका ठीक नहीं है. Why you are making this? आप जब वो बोल रहे थे इनको मौका मिला. When our election manifesto, we submitted the manifesto before the public. They have given mandate to the approval of the K-Rail projects. Sir. The Honourable Minister knows very well that the Silver Line project is included in the National Rail Plan. The Honourable Minister, no, the Silver Line project is included in the National Rail Plan. And it is, sir, and it is approved by the Government of India. And it is and it is approved by the Government of India. In 2021,
Budget speech, Honorable Finance Minister stated that all projects in National Rail Plan will be completed by 2030. No, please. Sir, the K-Rail project is accordingly your project also. Your project also. Your government is taking initiative and implementing all project included in the National Rail Plan, sir. तरीका है Sir, why you are exempting this K-Rail project alone from in the rail plan? Sir, no doubt it is a negative approach to development. गलत Sir, it is the basis of narrow politics. Sir, one request, sir. No. Sir, please don't depend upon the Honorable K. Sridharan's verbal talk. You may please go through the DPR. Going to submit here. Yes, going to submit, sir. Sir, I would like to know, sir. We will, let me complete. Sir, let me complete. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप जब प्रश्न पूछ रहे थे वो चुप थे I would like to know that you are announcing various projects, development projects. उसको भी संरक्षण दिया After जाएगा getting the DPR. गलत तरीका आपका Sir, you are announcing various development projects. Is it announcing after getting the DPR? So DPR is Honorable something Minister, subsequently. please. Sir, Okay. sir. माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक क्लियर मैंने जवाब दिया है। अब दिल्ली में दोस्ती और केरल में कुश्ती, इसका मैं क्या कहूं? ओके आपको मौका नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 206 मुझे लगता है एक मिनट बैठिए कौन सी पार्टी किस राज्य में एक है ये काम नहीं है सदन में प्रश्न पूछो मंत्री जी जवाब दें लेकिन केरल में और तमिल वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं उधर दोस्ती इधर कुश्ती है कैसा होता है सर क्वेश्चन नंबर 206 सुनील कुमार मंडल माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया। Thank you, sir. I would like to express my sincere thanks to you for giving me the opportunity to speak the most prominent topic, recruitment in railways. The answer paper I received in which list of the railway vacancy are given, but centralized employment notice number has not given in answer paper. As being a member of the Railway Standing Committee, I discussed about it. Our Standing Committee chairman and others, they also spoke about the vacancy post in railway. But I want to give details regarding it. Speaker sir, through you, I want to ask question from the railway minister. Every notification had been mentioned. Notification 1/2018. Total number of vacancy 57,839. माननीय अध्यक्ष जी, एक नंबर सर नो प्लीज बैठ जाइए माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमेशा से एम्फेसिस रहा है और विशेषकर रेलवे में माननीय अध्यक्ष जी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड स्ट्रेट करने की जरूरत है। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा उसका एक डिटेल आंसर दिया गया, लेकिन आपका जो विषय है मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, 2009 से 14 में रेलवे में मात्र 2,42,709 नियुक्तियां की गई थी। 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी
3,44,646 नियुक्ता किए हैं, 3,44,646। साथ ही साथ 1,40,713 वैकेंसीज पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, इस प्रश्न से रिलेटेड है। सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, ओपन माइंडेड सरकार है। किसी भी सजेशन को एक फ्रैंकली ओपन माइंडेड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखती है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है कि जो सबसे गरीब से गरीब तबके युवा वर्ग है, उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। जो विषय आप इंगित करना चाहते हैं उस विषय में भी जैसे ही छात्रों की तरफ से कंप्लेंट आई, बिना एक पल भी गवाए, एनटीपीसी कैटेगरीज के लिए हो, लेवल 1 कैटेगरीज के लिए हो, एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसको डील किया गया और उसका एक समाधान निकाला गया। इस तरह की हमारी भावना है, इस तरह की नीयत के साथ काम कर रहे हैं। Honorable member supplementary. Sir, second supplementary, it has come to the notice that IRCTC takes the tender for onboard catering service, which is further given to third parties as tender by the IRCTC. As a result, the quality of food served deteriorates, and me personally have received a lot of complaints about previously. Also, it has come to my notice that in train like Sialda Rajdhani, Howrah Rajdhani and other Rajdhani Express, where there are more than thousands passengers and there is only one pantry car in the inter-train, due to which the food hygiene and the service gets affected badly. So, Speaker Sir, through you, I want to ask question from the Railway Minister, is that in train like this, where we have more than 1,000 passengers is there any plan from the government from having two pantry car for easy and smooth service? मंत्री जी, अध्यक्ष जी, ये प्रश्नकाल है। अगर डिमांड फॉर ग्रांट्स का जवाब होता तो ओपन एंडेड होता। आईआरसीटीसी का विषय प्रश्न से बहुत अलग है, कभी किसी और वक्त पे बात कर सकते हैं इस पे। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I take this opportunity. We may have very strong political differences, but I want to put one thing on record. Starting from Mr. Piyush Goyal to you as the railway minister now, in Maharashtra, the railway, the toilets, the infrastructure and the cleanliness of railways has substantially improved. So I really want to put it on record that the railways is doing a very good job in my state. I travel extensively by train and I see a marginal, and I'd like to put it on record that I would like to thank Shri Piyush Goyal and you and the entire team behind that works very hard, because it's not a very easy task. I would just like to ask one question, that be it women or people with different label, because my colleague Kanimoli ji, and during the debate, extensively there was debate that a lot of women and young children also travel, and sometimes you don't want a ticket man to come at night to wake you up. So is there a chance that there could be some sensitive needs of where more women travel with children, so we employ more women in railways, as well as can we get all the jobs which is for reserved specifically for them, for people with disabilities, can that quota be covered up? Thank you. Sir, in fact, in the RPF, a special contingent of RPF female constables was recruited, and they are doing very good work, especially some schemes which Honorable Piyush Ji started were like Meri Saheli, where if there is a woman who is traveling alone, in that case the passenger was basically almost escorted by the female RPF, lady RPF constable, and such issues have been handled in a very sensitive manner. Whatever other suggestions are there, Honorable MP, and we can discuss and we can take it forward. Question number 207, Srimati Chinta Anuradha. माननीय मंत्री जी, laid on the table of the House. माननीय member. Sir, can the Honourable Minister clarify whether any proposals for creation of exclusive mining zones have been accepted and cleared by the government? If yes, please provide the details of the same, and if not,
Does the government propose to establish any exclusive mining zones in the coming years in accordance with the National Mineral Policy, sir? No, normally, sir, mining blocks identified by after a obvious geological survey, then the report will be handed over to state government, and the state governments, after handing over the reports, they will decide whether to auction it, at what level it had to be auctioned. We are now allowed even the auction at the G3 level, G4 level. It is up to the state government to decide which blocks, once either it is GSI or any other reports which we are having. Normally, we now at present we have GSI reports, and we submit it to the state. State will decide when to auction and on what condition it has to auction, and we have given a very clear guideline that it should be in a most transparent manner. Honorable member supplementary. Supplementary. You're sharing the question, sir. Thank you, Honorable Speaker. The National Mineral Policy 2019 pertaining to non-coal and non-fuel minerals has laid down target of increasing the production In just 1 year, 95 NITs have been issued, and only in this year, 37 blocks have been auctioned. These are all have been added to the production of the minerals in the country. And if I can say some which is interesting figures, as far as the new reforms in mining sector which Odisha has used proactively, the revenue from 13,900 to, as on today, it has gone up to the 41,000 crores, 19,000 to 19,900 crores to 41,000 crores. So, and many states are using it. I urge all the states to proactively to take up the blocks and the auction it, and these are the production is also increased from 53,000 to 78,000 crore last year. Sri Vishnu Prasad. Thank you, sir. I really appreciate that the government is looking at the point of revising the royalty rates. At the same time, in my state of Tamil Nadu, the people who gave the land for Neyveli Lignite Corporation, they have not got the jobs. Around 430 families are still jobless. Will the government consider ensuring them the complete job? And more accidents are happening nowadays in Neyveli Lignite Corporation. I request, I want to know through you, sir, whether the government is keen in controlling these accidents in future. Thank you. Sir, question is related to the mines and the royalty. I only appeal to honorable member to use his good offices so that Tamil Nadu can also come into auction. So far, Tamil Nadu, all other states, many other major states, they are auctioning. But as far as Tamil Nadu is concerned, still they are yet to auction. I only appeal to you, go for the action. And as far as the Neyveli Lignite Corporation safety issues are concerned, we are very seriously looking into it. There are 2 major accidents. I appreciate your concern, and we are very seriously looking at it, and we have asked them to take all precautions and also safety measures, and your other issues, we will look into it. Question number 208, Sri Ajay Nishad. 208. माननीय मंत्री जी. Sir, the answer is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है वो देश हित के साथ साथ समाज हित में ही। आशा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का नया मुकाम पाने के लिए अक्सर हो चुका है। महोदय, हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर काफी संवेदनशील है और हमेशा तत्पर भी रहती है।
कि कैसे युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। महोदय, एक बात पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि कोरोना के कारण देश में सैकड़ों फ्रंटलाइन वर्कर ने अपनी जान गंवाई है। इन वर्कर्सों में रेल के कर्मी भी शामिल हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इन कोरोना काल में रेलवे के कोरोना योद्धाओं को सेवा काल में हुई मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत और सरल नियुक्ति प्रक्रिया है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव से रिलेटेड था, लेकिन जो कोरोना काल में जो हमारे रेलवे के कर्मचारी कोरोना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए, निश्चित तौर पे उनके परिवार के लिए रेलवे में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अनुसार उनके परिवार के अन्य सदस्यों को जो नियुक्ति दी जाती है वो दी जा रही है। अगर कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए माननीय सांसद महोदय को, तो जरूर बैठ के उनको मैं सारी डिटेल्स दिला सकता हूँ। श्री सप्लीमेंट्री, अजय जी सप्लीमेंट्री। जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संदर्भ में एक और बात बताना चाहता हूं। करीब 2.5 साल पहले मुगल सराय मंडल में एक कर्मी की मौत हुई थी और महज 4 दिनों के अंदर अनुकंपा पर नौकरी माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में एक नया रिकॉर्ड बना था, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस पीड़ित परिवार को काफी राहत मिली। दरअसल 24 जनवरी को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के यार्ड में कार्यरत एक मेंटेनेंस दशरथ की मौत हो गई थी। काम के दौरान यह मेमू ट्रेन के चपेट में आ गए थे। तभी से इस संदर्भ अब एक व्यक्ति की जानकारी तो मंत्री जी को हो नहीं सकती, आप तो जनरल क्वेश्चन पूछो। आप मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मुगल सराय मंडल को आदर्श मान के इसी के तर्ज में पूरे देश में मंडल को सेवा काल के दौरान रेलवे कर्मी की मृत्यु के उपरांत अविलंब आश्रितों की नियुक्ति करने का कोई कार्य योजना है क्या? देखिए, मैं माननीय सदस्य के साथ बैठूंगा और जो भी इनका कंसर्न है इस विषय में, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस की जो बात कर रहे हैं उसका डिटेल उनको दे दिया जाएगा। श्री चंद्रशेखर प्रसाद, चंद्रेश प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जवाब जो दिया गया है उससे तो संतुष्ट हूं, लेकिन रेलवे द्वारा पदोन्नति के लिए विभागीय चयन परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पूर्व प्रचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया, इसकी जानकारी मिलती तो अच्छी होती। जी, ओवर जो मूल प्रश्न है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे जो नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्या उनको उनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव करने की जरूरत पड़े? अध्यक्ष जी, मैं इसका एक स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है, तब से रेलवे में रिक्रूटमेंट एक रेगुलर तरीके से चल रहा है और जो नियम है, संविधान की जो व्यवस्था है, उस संविधान की व्यवस्था के हिसाब से जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उतना रिजर्वेशन हो रहा है। एक पुराना समय ऐसा था जिसमें रिक्रूटमेंट ठीक टाइम पे होता नहीं था, तो वहां पे तब स्पेशल ड्राइव्स की जरूरत पड़ती थी। पिछली स्पेशल ड्राइव की जरूरत पड़ी 2008 में, पिछली स्पेशल ड्राइव की जरूरत पड़ी 2008 में। अब कोई स्पेशल ड्राइव की जरूरत नहीं है, अब एक रेगुलर तरीके से रिक्रूटमेंट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 209, विष्णुदत्त शर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या बोलो। प्रश्न क्रमांक 209। माननीय मंत्री जी। is laid on the table of the House. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट का जो अभियान लिया है, उसके कारण से कई प्रकार के कई आयामों में हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में इस योजना के अंतर्गत मैंने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहिए कि
वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में योजना के अंतर्गत वैल्यू एडिशन में मध्य प्रदेश के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, कितना रोजगार सृजित हुआ है और उद्यमिता में कोई प्रोत्साहन अगर मिला है तो उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से हर एक प्रदेश में, हर एक जिला में उद्योग बढ़ाना चाहती है, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है और उसमें से राज्य सरकार की कई योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की कई योजनाएं होती है और सबका संयुक्त प्रयास एक दिशा में होता है कि देश का भविष्य और उज्जवल हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। और मैं समझता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक एक खांचे में डालना कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है, ये कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत है, ये TIES स्कीम के तहत है, वैसे करना संभव भी नहीं होता है। पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। उद्योग में, सेवा क्षेत्र में जो अलग अलग मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, MSME सेक्टर को प्रोत्साहन देने की पॉलिसी और केंद्र की अलग अलग पॉलिसीज जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शामिल है, ये सब मिलके मध्य प्रदेश में प्रगति को और आगे गति दे रही है। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की संख्या नंबर 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य कभी आसन के समय पीठ पर नहीं खड़े होते हैं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Srimati Darshana Vikram Jardosh. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at the serial number 7 of the Ministry of Textiles as per the today's revised list of the business. माननीय सदस्य, ऑफिसर गैलरी के अंदर कोई भी माननीय सदस्य कभी भी खड़े होकर बात नहीं करें। आइटम नंबर 8, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, on behalf of my colleague Shri Som Prakash ji, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against his name at serial number 8 in today's revised list of business. Item number 9, Shri Devi Singh Chauhan. Honorable Speaker, sir, I rise with your kind permission to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. ये देवी सिंह जी इनको देवू सिंह कर देना भाई, करेक्शन कर देना, ठीक है ना। आइटम नंबर 10, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 10 पर यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2021 और 22 का 44वां, 45वां, 46वां और 47वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार। आइटम नंबर 11, श्री रितेश पांडे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति 2021-22 के 74वें से 77वां प्रतिवेदन मूल की गई कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।
श्री डीवी सदानंद गौड़ा वो बोल रहे हैं। 7th, 28th and 29th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee of Defence as listed against my name in today's list of business. Item number 13, Shri Pratap Rao Jadhav. आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख तथा सचिबुद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Item number 14, श्री डॉक्टर डाल सिंह बिसेन। मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 14 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। 1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगे 2022-23 के लिए 336वां प्रतिवेदन। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 337वां प्रतिवेदन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 338वां प्रतिवेदन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगे 22-23 के संबंध में 339वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 353rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 343rd report of the Committee on Demands of Grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, and 2. The status of implementation of the observations of league recommendations contained in the 354th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of league observations contained in 344th report of the Committee on Demands for Grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Honourable Speaker, sir. Item number 17 से अर्जुन राम मेघवाल जी। 16 श्री अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, on behalf of my colleague Shri Som Prakash ji, I make a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 157th report of the departmentally related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the government of the Committee on Demand for Grants Government on the recommendations contained in the 153rd report of the Committee on Demand for Grants 2020-21, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. 2. The status of implementation of the recommendations contained in the 161st report of the Departmental-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the review of intellectual property rights regime in India, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Item number 17, Shri Arjun Meghwal ji. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 21st of March 2022, will consist of, number 1, considerations of any item of government business carried over from today's order paper. It contains further discussions and voting on demand for grants for 2022-23 under the control of Ministry of Railway. Then second, discussion and voting on demands for grants for 2022-23 under the control of Ministry of Road Transport and Highway. Third, consideration and passing of the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect of State of Tripura. Then again, next, discussion and voting of demand for grants for 2022-23 under the control of following ministry:
Number 1, civil aviation. Number 2, port, shipping and waterways. Third item है हमारा consideration and passing of the constitutional scheduled caste and scheduled tribe order amendment bill 2022 after it is passed by Rajya Sabha. फिर है हमारा glutening of outstanding demand for grants in respect of union budget for 2022-23. Then last is consideration and passing of the finance bill 2022. Thank you, sir. Item number 18 से अर्जुन राम मेघवाल. Sir, I move the following with your permissions, that this House do agree with the 30th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 15th March 2022. प्रश्न है कि ये सभा 15 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत हैं. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया. माननीय सदस्यगण, रंगों के उत्सव होली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. होली का त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और पूरे देश को सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश देता है. आप सभी को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. दिनांक 14 मार्च 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये विचार दिया गया कि होली के अवसर पर 17 तारीख को अर्थात बृहस्पतिवार को सदन की बैठक स्थगित रखी जाए ताकि सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के साथ होली का त्योहार मना सके. मुझे आशा है कि सभा इसमें सहमत होगी. माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है. श्री मनीष तिवारी, एटी मोहम्मद बशीर, के सुरेश, एंटोनी, अब्दुल मजीद आरिफ, गौरव गोगोई, हनुमान बेनीवाल, बेनी बैनन, इबिडन. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. शून्यकाल. श्रीमती सोनिया गांधी जी. Mr. Speaker, sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between
big corporations, the ruling establishment. आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? And global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. Thank you. डॉक्टर सुकंद मजूमदार। थैंक यू सर। मैं इस शून्यकाल में अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपके नज़र में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसमें बुनियादपुर में सीपीडब्ल्यूडी का सेंट्रल डिवीजन ऑफिस था। एक कोरोना काल के दौरान इस ऑफिस को क्लोज किया गया है। मैंने मंत्री जी को बहुत बार इसके विषय में चिट्ठी लिखा है। देखिए, एक ऑफिस क्लोज करना सिर्फ एक ऑफिस क्लोज करने के साथ सीमित नहीं रहता। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस के साथ बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है जो कैजुअल स्टाफ बन के वहाँ पे काम करते हैं। तो इस कोविड काल में जहाँ पे हमारे सरकार की नीति है कि लोगों का जॉब ना जाए, लोगों का नौकरी ना जाए, उस समय पे इस सेंट्रल ऑफिस को बंद करना मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है एज ए जनप्रतिनिधि, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते इस तरह के डिसीजन होने के पहले उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ इस विषय में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि वो अपने सिद्धांत को पुनर्विवेचना करे और इस ऑफिस को खोलने का निर्देश दे। धन्यवाद सर। दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो कांग्रेस पार्टी है सर, ये 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये संविधान है सर, और संविधान में आर्टिकल 19 है। संविधान का आर्टिकल 19 है सर। और ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट जो सोनिया जी आरटीआई लेकर आई, वो आईटी एक्ट में 66A लाकर इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको रोकने का प्रयास किया। और ये जो मानसिकता है स्पीकर महोदय, ये मानसिकता ये है कि 14 अगस्त को यदि भारत का विभाजन हुआ तो उसमें से नेहरू का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। उसी तरह से यदि तिब्बत दे दिया जिसके कारण आज यूक्रेन आज रूस अच्छा कर रहा है सर, यूक्रेन पर फाइट कर रहा है। आज आप समझिए कि तिब्बत की हिस्ट्री को ये भुलाना चाहते हैं, 62 बार के हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी को ये भुलाना चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कश्मीर के इतिहास को भुलाना चाहते हैं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, इनको ये बताना चाहिए कि गुल मोहम्मद शाह को किस आधार पर जो है कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था और जिसके कारण कश्मीर का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरा आपके माध्यम से ये है, मेरा आपके माध्यम से कि फेसबुक और ट्विटर जो है स्पीकर महोदय, वो पब्लिशर है कि इंटरमीडियरी है, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। ये संविधान ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है अधिकार दिया हुआ है। और आज यदि यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ दिखाई देता है, जिन्होंने कि इंडियन एयरफोर्स के अफसर को मारा, तो उसको रोकने की कोशिश है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के कांग्रेस के समय किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया उसकी व्यवस्था करिए और देश को व्हाइट पेपर में सभी को जानकारी दीजिए और कांग्रेस पार्टी को भी बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। भीमराव पाटिल। Thank you, sir. Sir, with your permission, I would like to change the subject as I have already spoken on railway issue yesterday, sir. Today, I would like to raise a very important issue pertaining to our Telangana state. Sir, Secunderabad cantonment area is spread over large part of northern side of Hyderabad city. Two major roads connecting Nagpur and interstate highways connecting Chandrapur and a few state roads are passing through the cantonment. Over a period of time, these roads have been
widened owing to growing traffic demand. However, the state could not do so in the cantonment limits because the local officials are not permitting the same, sir. Indeed, Telangana state is now proposing to have the roads further widening and construct flyovers, skyways in order to meet the fast-growing traffic recruitments. Periodically, the roads in the cantonment area are closed to civilian traffic during night time. This is causing much inconvenience to the public and creating friction with the local authorities. Speaker, sir, though the chair, I bring to the kind notice the Honorable Defence Minister the above mentioned issues and request the instructions may kindly be given to the local cantonment official by the Honorable Minister and Ministry of Defence to extend necessary cooperation in this regard, providing permanent solution to these vexatious issues at the earliest, sir. Thank you, sir. Lao Sri Krishna. Lao Sri Hina Gaved. Sri Manne Srinivas Reddy. Sir, Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak today. As the House is aware, the Honorable Members of Parliament can recommend 10 names of admission of candidates in Kendriya Vidyalaya schools for an academic year in their parliamentary constituencies, which is insufficient. With much consent, I would like to draw the kind attention of the House that there will be around 7 lakh of population is parliamentary constituencies and the constituencies which are surrounding to metropolitan and other cities have hug population are more than 10 lakh also, and my Mahabubnagar parliamentary constituency, which is near to Hyderabad in Telangana state, is one among them. My constituency people reminding me wherever I go on tour and I am unable to give convincing reply with regard to KV admissions. Not only me, but the entire August House will agree with me that almost all the MPs are facing lot of pressure from all walks of this admission of their words in KV schools, and especially there is lot of demand from the poor and middle class people. Therefore, I request the Honorable Minister of Education through the chair to kindly consider for increasing the quota of Honorable MPs for recommending the admissions of more seats in Kendriya Vidyalaya schools. Thank you, sir. Sri K. Suresh ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, in Kerala, the Pinarayi Vijayan government is undeclared war with common people or local people, sir. Sir, Kerala government K-Rail Silver Line semi-high-speed rail corridor project is an example of communist brutality and terror, as the project is bulldozed through the homes and field of property, field of people by a criminal gang of CPIM affiliated police, revenue officials and K-Rail employees who are nothing but gundas of the LDA government. Sir, the criminal employees who are the henchmen of the state government violate every law of the land. They break open the homes of the people whose assets were earned from the entire lives and hard work. So the criminal gang of policemen and K-Rail officials plant survey stone inside people kitchens, while helpless women, children, senior citizens, bedridden patients, and even priests are terrorized and assaulted. They cry in utter helplessness, witnessing the government become a mafia gunda gang to implement Silver Line project, which is nothing but a ticking time bomb planted over Kerala, sir. Sir, even properties belong to churches, temples, and places of worship, schools, hospitals are being targeted for acquisition of Silver Line project, which does not hold any permission from the Indian Railways, Government of India, Niti Aayog. Sir, the Silver Line, sir, this is my personally demand. Yeah. I am coming, sir. Sir, I am describing the incidents what happened in my constituency, sir. Sir, the Silver Line project is a
prodigal white elephant with nothing less than 1 lakh crores plus bear, whereas the state government has produced fabricated and fake DPR, whose rosy picture to illustrate it with 60,000 crores as it cost estimated and is painted an environmental friendly project, sir. Sir, I will further explain to how the police and K-Rail goons have terrorized people by referring to an incident in Mulakkura village of Chenganur Taluk of my Lok Sabha constituency, Mavelikara. After hearing reports of police and K-Rail officials brutally assaulting women, children, parish priests, and elderly people, I reached sport to resolve the issue and save the people of my constituency from the police brutality. But instead of consulting with me, the police and K-Rail officials started abuse and harassed me. They did not even stop their verbal abuse and cast harassment even when they know that I am a member of parliament who represent the people. If such violence is shown against an MP, you can very well imagine what the common people, the women, children and elderly and even priests will have suffer when K-Rail goons knock at their doors like Nazis searching of Jews. The K-Rail officials and corrupt policemen with loyalty, only the CPM and Chief Minister Pinarayi Vijayan are selected for carrying out the mission Silver Line, who terrorize and assault everyone. I must also let the officials and police will turn to the Waterloo of CPM. Its action will be result creating Nandigram in Kerala. Sir, therefore, I am concluding, sir. Therefore, I am very thankful to sir give me opportunity to raise this very, very emotional issue in my country. Sir, I am concluding, sir. Therefore, by taking note of the atrocities and illegal action undertaken by the state government and Pinarayi Vijayan government, I request all the steps be taken government of India to deny the desist permission of any kind of K-Rail Silver Line project so that the state is saved from the coastal disaster. In this issue, sir, in this subject, sir, I have given a notice for privilege motion. Kindly accept my privilege motion, and for I am also among the member of the privilege committee. Kindly forward to privilege committee. Please, I humbly request you, sir. Sir, the undeclared war is going in Kerala, sir. Undeclared war. Russia-Ukraine war is going there. But in Kerala, another similar war is going. Another similar war is going on in Kerala, sir. Undeclared war is going. They are the government of Kerala. Government of Kerala. Sir, government of Kerala, without notice, they are reaching the police and K-Rail officials, going to their homes and putting the stone. Well, Lao Sri Krishna. Yeah, thank you, sir. Pidugurala, which is in Palnadu area, located on Guntur-Hyderabad highway, is popularly called the Lime City, as it is the hub of the limestone industry, sir. Since 1995, the industry has been facing a lot of crises, sir. But due to pandemic and also due to the recent Ukraine crisis, this whole issue has been blown out of proportion, sir. A ton of coal is costing right now around rupees 11,200 rupees, sir. But now it is costing, the cost has increased to almost 14,700 rupees, sir. In 2020, the price of petcoke was just around 8,500 per ton, sir. Now it has been shot up to almost 18,500 per ton, sir. The availability of coal and petcoke has also become a major issue. According to the manufacturer, they're losing around 400 to 500 rupees per ton, sir, in manufacturing of the lime powder. So, respected sir, through you, I request the Minister of Coal to either allocate or subsidize coal for the local manufacturers in Pidugurala so that they will be competitive across the country, sir, because this is the part of Atmanirbhar. So I hope the ministry will take this in a positive way, sir. Thank you very much. Shri S. Ram Lingam. Sir, thank you, sir. The textile and handloom industry in India is the second largest manufacturing industry, which are presently undergoing huge financial stress and closing its all operations mainly due to tax burden. In addition to COVID distress, the government has notified an increased GST
on natural fiber products, including apparels, from 5% to 12%, which might affect the textile manufacturing units in large extent. Due to above-mentioned reasons, the textile exports comprising textile, apparel and handicraft have affected badly. The present unsustainable price rise of cotton yarn has sabotaged the textile industry and affected the livelihood of thousands of workers. Additionally, the union government has brought the levy of 5% custom duty and 5% agricultural imports, which have infrastructure development cess and 10% social welfare cess on both, totaling 11% on cotton imports, which have unprecedented impacts on cotton price. Thus, I have requested the union government to keep the GST rate low and temporarily suspend 11% import duty on cotton yarn for certain time period and take relevant policy decisions to safeguard the interest of workers. Kindly extend the subsidy of 5%, which can save millions of small-scale workers. Kindly take some relevant measures to revive the MSME sector and allow them to participate in the procurement process. I humbly request you, sir, the minister to take necessary intervention to control the rising price of cotton yarn. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षितता सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है. देश भर के 65 लाख से ज्यादा लोग ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं. 2018 में श्रम संबंधित सदस्य समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त 2013 में कोश्यारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तित करे. ईपीएस 95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इस पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े. धन्यवाद सर. श्री मनोज तिवारी जी. परबत भाई पटेल. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बनासकांठा में वर्तमान में चल रही 6 मार्गीय भारतमाला परियोजना में किसानों को खेतों के रास्ते में एवं बारिश के पानी निकासी के संबंध में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिनको मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अवगत करना चाहता हूं. आदरणीय महोदय, जिस किसान के खेत में सड़क गुजर रही है उसका सर्वे नंबर ब्लॉक में 2 हिस्से में सड़क के कारण बन जाता है, उसमें दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता कहीं से भी बचता नहीं है. मेरा आपसे आग्रह है कि उसके लिए सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड का प्रावधान रखना चाहिए ताकि किसान अपने खेत में जा सके. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में दोनों साइड सर्विस रोड न रखना कंपनी के और से दोनों साइड में प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है. मेरा आग्रह है कि वो बंद कर देनी चाहिए ताकि किसान अपने खेत में आवाजाही कर सके. इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए. ये एक मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं, जालोर में भी यही बात चल रही है. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त लिखित समस्याओं को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द हल किया जाए, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो और परियोजना का कार्य भी आगे बढ़ सके. थैंक यू सर. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल. सर, मैं आपका आभारी हूं और होली की शुभकामनाएं आपको देता हूं. मैं मराठी में बात करना चाहता हूं. मराठी अगर है तो, नहीं तो हिंदी में बात करूंगा. बोलो आप मराठी. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात सातारा जिल्ह्यात पाचगणी आणि महाबळेश्वर ही थंड हवेची ठिकाणं
ब्रिटिश काळापासून गाजलेली आहेत. त्या काळातली लोकवस्ती अतिशय थोडी होती. 10-20 लाखांची लोकसंख्या कदाचित माझ्या जिल्ह्यात असेल. आज ती तिप्पट झाली आहे. भारताच्या सगळ्या क्षेत्रातून पाचगणी येथील जे शाळा आहेत, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आहेत, त्याकरता विद्यार्थी येतात. पण गेले कित्येक वर्ष या भागाचा विकास करण्याकरता पाचगणी आणि महाबळेश्वर नगरपालिकेनं जो मास्टर टुरिझम प्लॅन भारत सरकारने पाठवला आहे त्याच्या कोणत्या प्रकारची दाद घेतलेली नाही. आणि त्यामुळं आहे या भागामध्येच सगळ्या योजना राबवाव्या लागतात. आणि त्यामुळे येणाऱ्या प्रवाशांना राहण्याची सोय होत नाही. खेळणी, घोडे इत्यादी जे करमणुकीची ठिकाणे ते होत नाहीत. ब्रिटिश काळामध्ये घोड्याच्या पाठीवरून वेगवेगळे पॉइंट्स बघण्याकरता राईड्स होत असत. त्या ढासळलेल्या आहेत, पायऱ्या निखळलेल्या आहेत, घोड्यावर पंड्याच्या संख्या जो वाढलेला आहे. तेव्हा सामान्य जना परवडेल अशा, खिशाला परवडेल अशा पर्यटनाचा संधी मिळावी म्हणून जो मास्टर प्लॅन दिलेला आहे तो मास्टर प्लॅन लवकरात लवकर मंजूर करून त्या भागातल्या स्थानिक रोजगार करणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना रोजगार मिळावा. फळ विक्री करता यावी, फुल विक्री करता यावी, घोड्यावरनं सवारी करता यावी, याकरता जास्तीत जास्त प्रयत्न होण्याकरता आपण यात लक्ष घालावून आपल्या मार्फत आदरणीय वन व परिवहन मंत्र्यांनी ती परवानगी द्यावी हीच माझी प्रार्थना आहे. आपण मला या आज मराठीत बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी आपलं मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. देश